Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Yes, Sumaya. Yesterday we have started circles over here, and the basic, like the introduction, we were discussing it over here. Okay. So I'm trying, like we are proceeding from there. I'll be trying towards the last. Please wait. Okay. All the student will leave, but you will be waiting. Okay. I want to explain the introduction part to you. Okay. Okay, ma'am. So yes, Zanab, Galvin, Fazan, who all were there. Yes, Sumaya, the one thing I want to explain you over here, okay? Not everything what we have discussed yesterday, just one thing, that if we are having a circle, okay, and we can draw a tangent to a circle. If you will be drawing a line which is touching the circle at only one point, if you want to draw a line which is touching the circle at just one point, okay, maybe it will look like this, okay. It is touching the circle at one point only. Then we will be calling it tangent to the circle. Okay, this line is tangent. This line is tangent to the circle. Tangent at, suppose this one is point P. So this line, the line which I have drawn over here, let's call it a line AB. So line AB is tangent to the circle at a point P. Okay, and this point P is called point of contact because it is touching the circle. So the name, you can see from the name, it is obvious that point of contact because it is touching the circle at that point. So this point P is called point of contact. Now let's move. Uh, yeah, one more thing. This point is called point of contact, and if I'll be drawing a radius over here, which will touch this point of contact, if I will, you can understand. So Maya, for you I'm telling these all the Yes, things. ma'am. All the rest of the student, they already understand. If you can see that this is called the radius of the circle, right, Sumaya? This is Yes, also ma'am. the radius of the circle. This is also the radius of the circle. This is also the radius of the circle. But if you will draw a radius like this, with which will touch your point of contact, if you will draw a radius over here which will just touch the point of contact, this radius will be perpendicular, okay, to our tangent. This radius OP must be perpendicular to our tangent, this line AB. Okay, it will be making 90 degree at B. So this theorem also we have discussed yesterday. Now I'll be combining everything towards the last. Let's proceed from here. You just need to know this much because just like now we are going to discuss after this one. So yes, everyone, please focus over here. Yesterday, is it clear so far, Sumaya? What is tangent? Yes, ma'am. Okay, and when you will be drawing a radius through the point of contact, that radius only will be making 90 degree with the tangent. That's it. Okay, now suppose, yes, everyone focus over here. Okay, so suppose we are having a circle. If I'll be giving you a point, let's call it B, and I'll be asking you, please draw a tangent through this point P. Now you tell me, is it possible to draw a tangent through this point P? Is it possible? Yes. Galvin, Fazan, Zanab, Maha, Sumaya. Can we draw a tangent through this point P? क्या हम इस point P से tangent draw कर सकते हैं? No. Tangent का मतलब होता है एक ऐसा line जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, और यहाँ से हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल का tangent तो नहीं होगा, right? Yes, Right? ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. So if a point is there inside the circle, if we are having a point inside the circle, then we cannot draw a tangent.
Tangent not possible. Okay, fine. Fine. If I'll be giving you another scenario that we are having a circle and I'm giving you a point on the circle. A point on the circle. Now this time I'm calling it again point P. Now again I'm asking you, can you draw a tangent through this point P? Can you? Yes. Yes. Yes, we can draw a tangent through this point P. How many tangent we can draw from here? 1. One and only one tangent can be drawn from here. Okay. Yes, so Maya, this is also we were discussing yesterday that if the point will be mentioned, only one point is given. That through that point we can draw only one tangent. Okay. So yes, we can draw a tangent through this point and it will look like this. Okay. So yes, if a point we are having on the circle, then we can draw a tangent. Tangent is, of course, one tangent is possible. Now, if I'll be giving you one point P outside the circle, then how many tangent we can draw through this point? Think about it. How many tangent we can draw through this point? Let's try it. Let's try it. I'm trying it, making a tangent which will just go through this line. So tangent means a line which must touch the circle at at a point only. So maybe I can draw a line like this. बेसिकली हम एक ऐसा टैंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं जो ये पॉइंट P से पास हो बस. ओके, सो वी हैव ड्रॉन अ टैंजेंट. और एक टैंजेंट हम ड्रॉ कर पा रहे हैं क्या? लेट्स चेक इट. क्या हम और एक टैंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं? यस और नो? यस. तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट से पास होने वाला tangent maximum 2 tangent we can draw. Do we want to say that? Yes, we want to say that if a point we are having which is lying outside the circle, then maximum 2 tangent we can draw from that point. So what we discussed so far? We discussed so far that if a point is lying inside the circle, then we cannot draw any tangent from that point. If a point lying on the circle, why I'm discussing these cases? Can you recall when you were in lower classes, you have learned that when we will be drawing a circle on the plane, the plane is getting divided into 3 portions. One is inside the circle, one on the circle and one outside the circle. अगर हमारे पास एक ये प्लेन है, एक ये स्क्रीन है, एक पेज है और यहाँ मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, तो ये जो स्क्रीन है ये 3 पोर्शंस में डिवाइड हो गया. एक इनसाइड द सर्कल, एक ऑन द सर्कल और एक आउटसाइड द सर्कल. यस और नो? हैव यू लर्न दिस in your lower classes? That's why we are discussing that if we are having a point P lying inside the circle, how many tangent we can draw? No tangent. If a point P is there on the circle, how many tangent we can draw? Who joined just now? Yes, Ibad. This is your first class also. Yes, see, this is what I am explaining. That if we are having a circle and if there is a point P inside the circle, then through that point we cannot draw any tangent. Do you understand what does it mean? Tangent means what? Are you having any idea about tangent? Yes or no? No? Okay. So I was just now I was explaining that tangent means suppose you are having a circle. Suppose you are having a circle, because if I will not tell you what is tangent, everything else just you will not be getting it. So I need to tell. So if we are having a circle and if we'll be having a line which is touching the circle at only one point, suppose we are having a circle,
ओके हमारे पास एक सर्कल है एंड इस सर्कल को एक लाइन है जो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है और लाइन कुछ ऐसा दिखता है, तो इस लाइन को सर्कल का टैंजेंट लाइन बोलते हैं। ओके टैंजेंट जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा। अभी अभी और एक थ्योरम जो हमने कल डिस्कस किया था, आई हैव एक्सप्लेन टू सुमैया दैट अगर इस टैंजेंट के ऊपर अगर हम रेडियस ड्रॉ करें, रेडियस का क्या मतलब होता है, सर्कल में ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये सारे रेडियस है, बट अगर ये जो टैंजेंट है जिस पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है, इस पॉइंट का एक स्पेसिफिक नेम है, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के से पास होने वाला एक रेडियस ड्रॉ करेंगे, अगर जो कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये जो रेडियस होता है टैंजेंट के साथ 90 डिग्री क्रिएट करता है। आर यू गेटिंग इट इबाद? Yeah. Okay, after that I started explaining this one, that if we are having a point inside the circle, then how many tangent we can draw through this point P, and I have written over here that if a point is inside the circle then no tangent is possible, because tangent का मतलब ही होता है एक ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे, और इस P के थ्रू अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर देगा, उससे हम tangent नहीं बोलेंगे। Okay, next one, if a point is lying on the circle then only one tangent we can draw through that point. Okay, and the last case is if a point is lying outside the circle, then maximum two tangent we can draw through that point. Is it clear so far to everyone? Yes. Okay, suppose this point, the point at where this tangent is touching the circle, point of contact. Okay, suppose here the point of contact is A and suppose here the point of contact is B. Okay, now we'll be talking about the length of the tangent. Okay, I'm going to use a terminology that is length of the tangent. Tangent का length क्या है? So let me clear it. जब भी हम tangent के length की बात करेंगे और वो कुछ ऐसा tangent, okay, जो एक point P से आ रहा है और जो P सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, यहाँ पे जब भी हम length of the tangent की बात करेंगे, that means we are talking about the length of PA. Okay, point P and point A. This is point of contact. Now whenever we'll be talking about length of tangent, so we are having two tangents. Okay, one is PA, another is PB, and length of the tangent will be PA. ऐसा नहीं है कि हम इनफाइनाइट तक ये tangent, ये जो लाइन है, ये लाइन जाते ही जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो लेंथ कौन से लेंथ की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हम PA की बात कर रहे हैं, जहां पे टैंजेंट सर्कल को टच कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर जो एक पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ था उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो भी है उसे हम from now onward we'll be saying the length of the tangent. PA is the length of the tangent and PB is the another length of another tangent. Are you getting it that when we'll be talking about length of tangent हम कौन से length की बात करेंगे? Are you getting it? Yes. Okay. Yes, everyone. So far, is it clear to all? Ibad, Yes. Calvin, Fazan, Maha, Yes. 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 Sumaya. Yes. Okay, let's continue. Now there is a theorem which says that the lengths of tangents drawn from an external
point to a circle are equal. According to this theorem, if we are having an external point P, and through this point, if we are drawing the tangent, which is only maximum two tangent we can draw, both the tangent will be of same length. Yes, it will be of same length. Okay. Here, if you will draw the tangent properly, construction and all, if you will measure the length P and PB, you will find that it is equal. Okay, and that's what we are going to prove here. So let's prove it. Suppose we are having one of the tangent as a, let me draw the figure as the name and all given in the book. Suppose we are having a point P over here, okay, and we are drawing a tangent through this point. So let's draw it. Now I can extend it, okay. I can extend this tangent, but when we will be talking about the length, we'll only be taking this much length, which I am showing over here. This is Q, okay, this is R. Let me make a solid line. Here the center O is there. Yes. Okay. Let's prove it that this length of the tangent PQ and PR, this two are same. PQ is equals to PR. That's what we have to show it. See the theorem. The theorem says that the length of the tangent drawn from an external point. If we are having an external point, and through that external point, if we are drawing tangents, okay, then the length of the tangents will be same. Okay, length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. Okay, let's prove it. So what we can do, what we will do, we will join, let's extend it. Doesn't matter, but we'll be only thinking about this length PQ, even if I'm extending it. Let's extend it. So what we can do, we will join this center. Think, just listen to me very carefully. If we are having the center O, and if we will join this center O with this point of contact, can we say this will make 90° over here? Can we? Can we? Yes. Can we say that? If we are having a tangent, okay, now only I was explaining that if you will be drawing a radius which will touch the point of contact, that means here we must have 90°. Yesterday in our class I was explaining it that this will be the shortest distance and hence it will be right angle. Can you recall everyone? Yes. Yes. Okay. Yes, Galvin, Fazan, can you recall that if you will be joining O with P, this will be the shortest distance and hence it will be 90°. Ibad, I'll be explaining these things to you. Okay, I'll be giving after the class. Please wait. Don't leave. Okay, Ibad, Okay. are you there? Yeah. Okay. Okay, after the class, please wait. Okay. So Okay. if we are joining this O with Q, the point of contact and O, it is just a radius, and this is a special radius which will make 90° with our tangent. Okay. Similarly, we will be joining. We will be drawing the another radius also from the radius, but we know this is a special radius which will make 90° over here. So far, is it making sense to all of you? Galvin, Fazan, Baha, Zanab, Ibad. Yes, ma'am. Yes, please, everyone respond. Then only I'll be moving ahead. Yes. 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 Okay. Okay. Let's move. Zanab, are you getting it?
Yes. Now we are going to use the concept of congruency to prove. Let me write it crystal, like it is very clear from the theorem that we have to prove that the length of tangent PQ is equals to the length of tangent PR. This is the motto. Okay, this is the purpose, that we want to prove PQ is equals to PR. Now what we will do, we will be using the concept of congruency. Okay, so what now I'm going to join this O with P. This construction we are doing by ourselves. Okay, a construction we are doing by ourselves, joining O and P, which we can write over here in the construction part. That to prove it, we are joining the center O with the external point P. Now, can you see two triangles over here? Can you see two triangles? Yes or no? The upward one and the downward one. Can you see these two triangles? This one and the other one. This one. Now, if I am asking you, is it possible to show that these two triangles are congruent? Is it possible? If we will be taking the triangle POQ and triangle POR, is it possible to show that these two triangles are congruent? Is it possible? Yes. What we will be By taking SAS. by SAS? Yes, let's make PQ a and list. PR will be equal, and then No, no. QO will equal OR since their radius is right. Yeah. But PQ and PR, Maha, we want to show. Okay, we cannot take. We want to show. PQ and PR are not equal. Oh, then you can take You can angle take PQO equals angle PRO since they are 90 degree, and then radius is QO equals OR, and then PO equals PO as common side. Yeah, perfect. So let's take it. Let's take it. We know there is a common side PO and Q in both the triangle PO, OP, whatever you say, common side. There is a 90 degree in that triangle and there is a 90 degree in this triangle. So we'll be writing it, angle PQO is equals to angle PRO. Okay, right angle. We need to write the reason over here. You just write this theorem, the complete theorem over here. The tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius. Okay, the tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Okay, basically you just need to write the tangent is perpendicular to the radius through the point of contact. Okay, now apart from this, we can also say that OQ and OR are nothing but just the radius of the same circle, and these two must be same. Okay, so this three list we have created over here. Now, which criteria is working? SAS, SSS, angle side angle, angle side. What? RHS. Let's mark it. Let's mark it. Then you can you you can take any one of the triangle, either the purple one or the green one. Okay. So suppose I am taking the purple one. So we have used this angle. Okay, I'm writing. We have used this angle. We have used this side. What else we have used? We have used this side also. So side angle rule is not there. But
but we are having 90° over here. So can we say R, H, S? Can we say a right angle is there, hypotenuse is there, and one of the side is there? Can we say RHS congruency is working over here? Can we say that? Yes or no? Yes. Yes. Everyone agreeing that RHS congruency is working? A right angle is there, then the hypotenuse in both the triangle, hypotenuses are same. Okay, and one of the another side is also same. So R, H, S congruency is working. Galvin, Fazan, are you getting it? Yes, ma'am. Okay, so yes, let's continue. I'm going to write over here that by RHS congruency criteria, these two triangles are congruent with each other. But while writing the congruency, we must be careful with the name of the triangle. Okay, so I must write OP in the same sequence. So here OP and OP. So far randomly I have taken this name POQ and POR. I'm just checking the name which I have written upward. Is it the correct name? Because here I'll be using the sign of congruency, and here the name must be very like proper, arranged. Okay, randomly you cannot write. You cannot write random name. You cannot say it is just a triangle QPO or POQ. Okay, both the side the name must be proper. Then only by CPCT will be able to say that PQ is equals to PR. Okay, so let's write the name properly. You must have learned these things in class 9. Again, I am showing you the name we must write properly. So OP must be at the same place. Okay, angle Q and angle R must be at the same place. And similarly, OQ and OR must be at the same place. So let me check over here only. Okay, without thinking anything, randomly I have written a name over here. Let me check whether it is correct or not. Even if it is not correct over here, fine, because here you are not writing the name like very carefully, that is fine. But while using the sign of congruency, you must write the name properly. Okay, so ध्यान से हमें नेम लिखना होगा. नेम मैं क्या बोल रही हूँ तब से? मैं बता रही हूँ कि नेम ध्यान से लिखेंगे, मतलब कि यहाँ ओपी एंड यहाँ ओपी सेम प्लेस पे रहने चाहिए. यहाँ जो फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर्स मिलके ओपी क्रिएट करे, और यहाँ भी फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों आपस में इक्वल है, तो ये सेम प्लेस पे रहने ही चाहिए जब हम कंग्रुएंसी का साइन यूज कर रहे हैं. ठीक है, that's what is the meaning of the name. Okay, so let's write it. An angle Q over here must be equals to angle R over here. It looks like I have written it correctly over here. Okay, and OQ is equals to OR. मतलब OQ and OR मैंने same sequence में maintain किया है. Okay, so the name which I have written, randomly I have written. यहाँ लिखते टाइम मैंने सोचा नहीं था. Okay, but ये name correct है. Everyone is getting it. Is it making sense to all of you what I am talking about? Yes. Zanab, you are getting it. Maha, Yes. you are also getting it. Yes, Galvin, Ibad, Fazan, Sumaya, are you there? Yeah. Yes, ma'am. Yes. Okay, ये थ्योरम हम डिस्कस कर रहे हैं. That अगर हमारे पास एक सर्कल है और उसके बाहर एक पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि अगर एक सर्कल है और बाहर एक पॉइंट लाई कर रहा है, तो उस पॉइंट के थ्रू मैक्सिमम हम 2 टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. और उसके बाद हमने ये थ्योरम प्रूव करना स्टार्ट किया. ये थ्योरम, द थ्योरम सेज दैट द लेंथ ऑफ द टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. मतलब कोई एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि इस केस में मैक्सिमम 2 ही ड्रॉ कर पा रहे हैं, ये दोनों टैंजेंट्स का लेंथ आपस में इक्वल होगा. दैट्स व्हाट वी आर प्रूविंग ओवर हियर. वी आर प्रूविंग लेंथ ऑफ द टैंजेंट का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ द टैंजेंट का मतलब होता है जो हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो हमें लेंथ मिल रहा है उसे हम लेंथ ऑफ टैंजेंट बोलते हैं. यहाँ ये जो PQ तक जो लेंथ हमें मिला है, Q पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो PQ तक जो ये जो लेंथ है हमारे पास, इसे लेंथ ऑफ टैंजेंट हम बोलते हैं.
सिमिलरली पी आर तक जो लेंथ है इसे हम लेंथ ऑफ टैंजेंट बोलते हैं, और हम यहाँ क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। हमने कंग्रुएंसी के कंसेप्ट का हेल्प लिया, यहाँ पे हमने रेडियस ड्रॉ किया क्यू। मैं यहाँ फिर से बता रही हूँ, हमारे पास एक सर्कल था, एक एक्सटर्नल पॉइंट था, हमने ट्रांजेंट ड्रॉ किया। और लेंथ ऑफ टैंजेंट का क्या मतलब होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो जितना लेंथ है, इस लेंथ को लेंथ ऑफ tangent बोलते हैं। PQ is the length of this tangent and R was there. Yeah. PR is the length of tangent. Okay, for this tangent. We are trying to prove that PQ and PR दोनों लेंथ सेम ही होंगे। We are trying to prove that. इसके लिए हमने क्या किया, हमने center circle का O already we were having. We have joined, we made the radius over here. और अभी अभी सबसे पहले इस क्लास में हमने डिस्कस किया कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच होने वाला रेडियस हम ड्रॉ कर दे तो वहां पे 90 डिग्री क्रिएट होता ही है। ये एक थ्योरम है। ओके, आई विल बी एक्सप्लेनिंग द थ्योरम टू द स्टूडेंट्स हु वर नॉट प्रेजेंट इन द यस्टरडेज क्लास। और अगर इस वाले टैंजेंट पे भी एक रेडियस हम ड्रॉ कर दे जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो, तो यहाँ ऑफ कोर्स 90 डिग्री क्रिएट होगा ही होगा। ये हमें ऑलरेडी पता है, हमने P और O को ज्वाइन करके दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया इस फिगर को। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट ये जो हमारा POQ ट्रायंगल है और ये जो हमारा दूसरा POR ट्रायंगल है, ये दोनों आपस में कंक्रुएंट है। ये हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम कंक्रुएंट प्रूव कर पा रहे हैं तो वहां से बाय CPCT हम बता पाएंगे कि PQ और PR तो सेम ही है। ओके, तो यस, वी आर एबल टू प्रूव दिस टू ट्रायंगल्स आर कंक्रुएंट। कैसे हम प्रूव कर पा रहे हैं, एक 90 डिग्री ऊपर वाले ट्रायंगल में एक 90 डिग्री इज देयर इन द लाइक दिस द बिलो ट्रायंगल। ओके, नाउ OQ ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों का लेंथ सेम है। और उसके अलावा क्या है हमारे पास, OP, दिस इज द कॉमन साइड वी आर हैविंग इन बोथ द ट्रायंगल। By RHS congruency, a right angle, a hypotenuse is same in both the triangle, and one of the another side is also same. So by RHS congruency, we say that these two triangles are congruent, and we have written the name very specifically, very properly, that POQ is congruent with POR. Okay, now only I was explaining that writing the name over here in a proper manner is very important. Then only we can say that yes, by CPCT PQ and PR will be same. So we have written the name very properly. Okay, what does it mean writing the name properly? So हमारे पास जितने भी information है, that is OP common side है, angle Q angle R दोनों ही right angle है, हमारे पास ये जो 3 इंफॉर्मेशन है जिसे यूज करके हमने RHS कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई किया है, ये 3 इंफॉर्मेशन इनफ है प्रॉपर नेम लिखने के लिए। ठीक है, OP, दिस OP एंड OP मस्ट बी इन सेम सीक्वेंस, हमने सेम सीक्वेंस में मेंटेन करा है। ओके, नाउ एंगल Q ओवर हियर एंड एंगल R ओवर हियर, दोनों these two are same, both must be sitting at a same place. So Q and R को हमने same place पे लिखा है। फर्स्ट वाले ट्रायंगल में थर्ड जो अल्फाबेट है वो Q है, एंड सेकेंड ट्रायंगल में भी सेम। नाउ Q and OR are same, we have maintained it over here. We are done with the congruency. हमें करना क्या है यहाँ पे, we have to say that both the tangents length are same. Now we will be able to say hence PQ is equals to PR by CPCT. Is it crystal clear to all of you? Yes, ma'am. Yes. Yes. So like this we will be proving this theorem. Okay, now we will start solving the question. There is a exercise 1 also, but why I have not taken that exercise over here, because few students are there who don't know anything, these all. So let me give the concept to them. Let me check on time also. Okay, yes, do you have access to class 9 books? Do you have
the class 9 book, or from anywhere can you get the class 9 theorems from circle, which I have written on the screen? The perpendicular from the center of a circle to a chord, bisect the chord. This theorem which you have learned in class 9. Class 9 पे जो theorem, like whatever you have learned in class 9, can you go through that theorem before the next class? Okay. Is it possible? Okay. Yeah. Please go through all the theorems. Okay. Just एक बार देख लेना. Proof की जरूरत नहीं है हमें. हमें सिर्फ सारा theorem देखना है. And if you want to take a screenshot from here, you can take it. So this is the first, this is the second, this is the third. Numbers I have not given. If you want to take a screenshot, if that is possible for you, you can take it from here. Okay. Shall I scroll down or you are trying? Scroll. Scroll. This much theorems we are having. Numbers I have not written. जो मैंने स्पेस दिया है ना, मतलब हमारा थ्योरम चेंज हो रहा है. ठीक है. ये सारे थ्योरम हम नेक्स्ट क्लास में क्विक एक बार जस्ट ओवरव्यू में दे दूंगी. ओके. then we'll start solving the question. Please everyone just go through all this theorem so that we can cover it within like 5 to 10 minutes and then we can start solving the questions. Okay. तो मैं आज इतना ही रखूंगी. फर्स्ट एक्सरसाइज जनाब, महा, Galvin, Fazan. Open the first exercise at your home. Just open the first exercise and you will find that all the question you will be able to do it by yourself. Okay. 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 So today I am going to keep this much. You have to do two things. You have to go through this theorem and you have to solve first exercise completely by yourself, which is nothing but just filling the blanks question. Okay. So I'm keeping this much for you. Let me tell you the name. Galvin, you was present in the yesterday's class. You can just, for you I'm keeping it this much. Okay. You can leave after this one. और अगर कल वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज लीव नहीं करना क्लास. ओके. Yes, ma'am. यस. महा, जनाब एंड फैजान, जो कल वाले क्लास में प्रेजेंट था, अगर कल वाला कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है देन यू कैन लीव द क्लास. अगर कल वाले कंसेप्ट में डाउट है देन यू कैन बी हियर. ओके. Okay, yes, Ibad and Sumaya. I want to explain what we were discussing yesterday. So let me tell you quickly. Yes, Ibad and Sumaya and Fazan. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes. ध्यान से देखो. अगर हमारे पास, you both understand Hindi, right? Because we are having just 10 minutes, so I'm trying to cover it quickly. You both understand Hindi, right? Yes. Okay. अगर हमारे पास एक सर्कल है और हमारे पास एक लाइन है, मैंने एक, like I have given you a circle and I have given you a line and I am telling you कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं इस लाइन और इस सर्कल को अरेंज करने का. Okay, then you will be finding that only 3 possibilities are there. या तो लाइन को सर्कल के साइड में रख देते हैं, या फिर लाइन को सर्कल, या फिर ये जो लाइन है हमारे सर्कल को ऐसे कट कर देगा, या फिर ये जो लाइन है हमारे सर्कल को जस्ट एक पॉइंट पे टच करके ऐसे निकलना है. और कोई पॉसिबिलिटी है? इबाद, सुमैया एंड फैजान. Yes, ma'am. और कोई पॉसिबिलिटी? यही 3 पॉसिबिलिटीज हो रहे हैं. अगर हमारे पास एक सर्कल हो और एक लाइन हो तो यही 3 पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं. हाँ या ना? Yes. Okay. So the first case is called the line is non-intersecting line. पहले वाले केस को, जब भी ऐसा लाइन हो सर्कल के साथ जो सर्कल को टच ही नहीं कर रहा है, ऐसे लाइन को हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. सेकेंड वाला लाइन जो सर्कल को ऐसे पूरा कट करके जा रहा है, इसे हम सीकेंट बोलते हैं. तो आज के बाद से जब भी ये टर्मिनोलॉजी सीकेंट रहे, सीकेंट का मतलब एक ऐसा लाइन जो सर्कल को
इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे। ओके, अगर मैं बोलूं कि ये जो लाइन है हमारे पास, इस लाइन का नेम है ए बी एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी क्यू, तो ये जो ए बी लाइन है, इस लाइन को हम सेकेंड बोलेंगे, क्योंकि ये सर्कल को पूरा ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसे जब भी लाइन होंगे इसे सेकेंड बोलेंगे। और ये जो पॉइंट पी एंड क्यू है, यहाँ से हमें एक करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी मिल रहा है, आया ना? कैन वी से पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल? कैन वी से दैट? Yes, ma'am. सो दिस सीकेंट, ये जो सीकेंट है हमारे पास ए बी, ये हमें एक कॉर्ड पी क्यू दे रहा है, लेकिन पी क्यू इज अ कॉर्ड एंड ए बी इज अ सेकेंड। जब भी हमारे पास सर्कल में एक कॉर्ड होगा, जब भी हमारे पास सर्कल में एक कॉर्ड होगा, तो उसे हम एक्सटेंड अगर करेंगे दोनों साइड से, तो हमें सीकेंट मिल जाएगा। तो सीकेंट का मतलब होता है बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन जो दोनों साइड से इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ठीक है? और कॉर्ड का मतलब है एक ऐसा लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। गेटिंग इट? Yes, ma'am. Yes, Iban, you also keep on telling me. Are you Yes. getting on? एंड थर्ड सिनेरियो में हमें क्या मिल रहा है? एक टैंजेंट लाइन मिल रहा है। जो टैंजेंट मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया कि एक ऐसा लाइन जो सर्कल को एक और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, उसे टैंजेंट बोलते हैं, ठीक है? तो यही 3 सिनेरियो जनरेट हो रहे हैं। अगर हमारे पास एक सर्कल हो, एक लाइन हो, तो या तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकता है, या फिर सेकेंट हो सकता है, या फिर टैंजेंट हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ना इफ वी आर हैविंग अ सर्कल, अगर हमारे पास एक सर्कल है और हमने एक सेकेंड ड्रॉ कर दिया, या फिर हमने एक लाइन, हमारे पास एक लाइन है और एक वायर है, ठीक है? एक सर्कल है हमारे पास और एक वायर है। सपोज you are having a bangle, a circle or a circular ring you are having, and you are having a wire. इस वायर को अगर हमने वायर मूव भी करेगा, कैन वी से दैट? कैन वी से दैट अगर हमारे पास एक सर्कल है और उसमें मैंने एक वायर सिर्फ एक ही पॉइंट पे अटैच कर दिया, तो ये वायर ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, आया ना? यस और नो? Yes. यस सुमैया, कैन वी से दैट? Yes, ma'am. ओके, तो ये जो वायर ऐसे मूव करेगा, तो हम यहाँ से इस एक्टिविटी से क्या पाएंगे? इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलेगा कि ये जो वायर है कभी सिकेट की तरह दिख रहा है, कभी टैंजेंट की तरह दिख रहा है, कभी कुछ ऐसा दिख रहा है, ये भी एक सेकेंड है, कभी कुछ ऐसा दिख रहा है, ये भी एक सेकेंड है। तो ये जो वायर है, ये कभी सेकेंड बन जा रहा है, कभी टैंजेंट बन जा रहा है। सो यहाँ से हम एक स्टेटमेंट, मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रही हूँ। Just tell me whether it is making sense to you or not. The tangent is a special case of secant when both end point का मतलब है कि जो intersecting points है P and suppose ये Q1, या फिर P suppose ये Q2, या फिर P suppose ये Q3, ये दोनों end point है, P and Q1 और मे बी P and Q2, ओके? ये end point है when both end point coincide. Is it making sense to both of you कि tangent जस्ट सेकेंड का एक स्पेशल केस है। जब हम वायर को मूव करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो सेकेंड से हमें क्या मिल जाएगा? एक टैंजेंट मिल जाएगा। तो कैन वी से दैट टैंजेंट इज नथिंग बट जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड, जहाँ पे सेकेंड के टाइम पे हमें 2 एंड पॉइंट मिल रहा था, वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकल रहा था, और ये दोनों पॉइंट क्लोज आते जा रहे आते जा रहे आते जा रहे आते जा रहे, और एक पॉइंट पे टच करके टैंजेंट बन जा रहा है। कैन वी से दैट कि सेकंड से ही तो हमें टैंजेंट मिल रहा है, हाँ या ना? Yeah. Yes, ma'am. ओके, सो टैंजेंट कहाँ से मिला? सेकंड से मिला। कब मिला? जब सेकंड के जो जो एंड पॉइंट थे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, वो क्लोज आते 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 दोनों एक दूसरे पे लाई कर जा रहे हैं, तो हमें एक टैंजेंट मिल जा रहा है। वही मैंने स्टेटमेंट में लिखा है कि टैंजेंट इज नथिंग बट जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड,
when both the end point coincide. Clear? Yes, Yes. ma'am. इसके बाद एक एक्टिविटी था जिसमें हमने ये डिस्कस करा था कि अगर हमारे पास एक सीकेंड दिया और इस सीकेंड के पैरेलल कितने सारे टैंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, कितने सारे ऐसा टैंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं जो इस सीकेंड के पैरेलल हो। तो हमने कल डिस्कस किया था कि इसके अगर ये अगर हमारा सीकेंड कल सपोज दिस इज ए बी, सो इसके पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करना शुरू करें तो हम पाएंगे कि इधर लाइक टुवर्ड्स द राइट वी कैन ड्रॉ अ टैंजेंट एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट वी कैन ड्रॉ अ टैंजेंट। तो अगर हमें कोई भी एक सीकेंड दिया हुआ उसके पैरेलल हमें पूछे कितने सारे टैंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 ही टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। 2 ऐसा टैंजेंट हमें मिलेगा जो सीकेंड लाइन के पैरेलल है। एम आई मेकिंग सेंस? Ma'am, can you explain again? My network is bad. I couldn't hear you. I said that whenever we'll be having a secant, इस secant के पैरेलल कितने सारे tangents हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या हम फिगर से देख पा रहे हैं कि इस secant के पैरेलल सिर्फ 2 ही tangent ड्रॉ हो पाएंगे? क्या हम ये कह सकते हैं? Yes, ma'am. Yes. तो ये इसके बाद से जब भी ये स्टेटमेंट फॉर्म ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में आए कि अगर एक सीकेंड दिया हुआ है और उसके पैरेलल कितने सारे टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि 2 ही टैंजेंट्स पॉसिबल है, एक टुवर्ड्स द राइट टुवर्ड्स द लेफ्ट, और मे बी अगर सीकेंड ऐसा दिखता है कुछ तो एक टुवर्ड्स द अप एंड अनदर वन टुवर्ड्स द डाउन। इसके अलावा और कोई टैंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं एक और एक कंसेप्ट था कि अगर हमारे पास सर्कल में एक पॉइंट दिया हुआ हो P, इस पॉइंट P से कितने सारे टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो सिर्फ एक ही टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो इस पॉइंट P को टच करे। अगर कोई ऐसा लाइन ड्रॉ करने की हम कोशिश करेंगे तो वो सर्कल को फिर टच कर देगा दूसरे पॉइंट को भी। आ रहा है समझ में कि अगर एक पॉइंट हमें दिया हुआ हो तो उससे सिर्फ एक और एक ही टैंजेंट ड्रॉ किया जा सकता, अगर एक पॉइंट दिया हुआ हो तो। गेटिंग इट? Yes. ओके। और अगर पॉइंट ही ना दिया हुआ हो और बोले इस सर्कल में कितने सारे टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैं बताऊं कि इस सर्कल में बहुत सारे इनफाइनाइट टैंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल कैसे बना हुआ है, इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ है। this point, this point, this point, this point, this point, this point, so many points we are having। और अगर बिना कोई पॉइंट स्पेसिफाई किए मैं बोलूं एक सर्कल में कितने सारे टैंजेंट पॉसिबल है, तो हम बोलेंगे एक सर्कल में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, दैट मींस इनफाइनाइट टैंजेंट्स वी कैन ड्रॉ। गेटिंग इट? Yes, ma'am. Yes. ma'am. ओके। तो अगर मैं एक पॉइंट स्पेसिफाई कर दूं तो सिर्फ एक और एक ही टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर मैं कोई भी पॉइंट स्पेसिफाई ना करूं और बोलूं सर्कल में कितने टैंजेंट हो सकते हैं, तो सर्कल में तो इनफाइनाइट टैंजेंट्स हो सकते हैं। So these are the concepts which we were discussing in the yesterday's class. Apart from that, we have also discussed this theorem. The tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact. इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, ओके, अगर हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं मे बी एट अ पॉइंट P, और इस सर्कल में ऑब्वियसली इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, but the radius which will pass through this point of contact, एक ऐसा रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होगा, ये रेडियस ऑलवेज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री क्रिएट करेगा। इस थ्योरम का प्रूफ भी हमने डिस्कस किया था। this just we have discussed the proof of this theorem. Okay, I have not written the statement, you just try to understand, okay, because the statement it is just a statement based theorem. Okay, so मैं explain कर रही हूँ कि क्यों ये 90 डिग्री होगा। ध्यान से समझो।
अगर हमारे पास एक सर्कल है, अगर हमारे पास एक सर्कल है और एक पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, मे बी पॉइंट क्यू, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो ओ क्यू होगा ये रेडियस से बड़ा ही होगा? कैन वी से दैट ओ क्यू मस्ट बी बिगर देन द रेडियस ऑफ दिस सर्कल? कैन वी से दैट कि सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट ले, कोई भी पॉइंट ले और उससे सेंटर को ज्वाइन कर दे, तो जो भी हमें डिस्टेंस मिलेगा वो रेडियस से तो बिगर ही होगा? कैन वी से दैट? कैन वी से दैट? Yes, ma'am. यस, क्योंकि रेडियस का मतलब क्या होता है? अ लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सो ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस है, 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 ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लाई करे और हम ज्वाइन करते सेंटर से तो हमें रेडियस मिल जाता है। सर्कल के बाहर अगर हमें कोई भी पॉइंट मिले जो कि जस्ट बाहर हो, जस्ट बहुत ही क्लोज हो लेकिन जस्ट बाहर हो, मे बी एक पॉइंट एन, इसे हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये ON तो रेडियस से बड़ा ही होगा लेंथ? यस और नो? इबाद एंड सुमैया, Yes. Yes, ma'am. ओके? दैट मीन्स क्या हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्कल के बाहर कोई भी एक पॉइंट हो उसे सेंटर से ज्वाइन करे तो वो रेडियस से हमेशा बिगर होगा? यस, आई वांट टू से द सेम एंड यू कैन सी द सेम, ओके? आई सो लेट्स ड्रॉ द थिंग विच वी वांटेड टू डिस्कस कि यहाँ 90 डिग्री क्यों क्रिएट हो रहा है, यहाँ 90 डिग्री क्यों क्रिएट हो रहा है। उसके लिए मुझे और एक चीज एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सपोज एक पॉइंट है P, ओके, एंड वी आर हैविंग अ लाइन इज, लेट्स से द लाइन इज L। नाउ पॉइंट P का लाइन L से अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो तो क्या हम कह सकते हैं कि ये भी एक डिस्टेंस है Pn? पॉइंट P का लाइन L से डिस्टेंस Pn एक डिस्टेंस हो सकता है, राइट? राइट इबाद एंड सुमैया? Yes, अगर ma'am. हम पॉइंट P का डिस्टेंस हमारे लाइन L से निकालना चाहते हैं तो हम Pn को मेजर कर सकते हैं, या फिर हम PO को भी मेजर कर सकते हैं, या फिर हम PT को भी मेजर कर सकते हैं। तो क्या हमारा लाइक एवरी पर्सन हैव डिफरेंट डिस्टेंसेस? मैं बोलूं डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, इबाद you will say that no, I am getting 12 centimeters, Sumaya will say no, I am getting 8 centimeter। तो क्या हम ऐसे, कोई अगर एक पॉइंट हो हमारे प्लेन पे, कोई अगर एक पॉइंट हो और उसका एक लाइन से हमें डिस्टेंस निकालना हो, तो क्या लाइक डिफरेंट पर्सन विल गिव डिफरेंट डिस्टेंसेस? yes, different person will give different distance, but हम ये डिस्टेंस तो कभी लेंगे ही नहीं, हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेंगे क्योंकि वही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। कैन यू सी दैट? Yes, जो ma'am. परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इवन इफ क्वेश्चन में बोले या ना बोले, हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लें। कभी भी एक पॉइंट दिया हो और एक लाइन दिया हो और बोले डिस्टेंस फाइंड करो तो हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। क्यों? क्योंकि इस फिगर से भी हमें हमारे आईज को दिख रहा है कि यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। okay, shortest distance is the perpendicular distance and that's why coordinate geometry में जब हम किसी भी पॉइंट की बात करते थे तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके डिस्टेंस पता करते थे, हाँ या ना? Yes, ma'am. ओके, तो अब से हमें ये पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अब हम फिर से हमारे थ्योरम की तरफ आते हैं और हमारा थ्योरम क्या था कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और अगर हमारे पास एक टैंजेंट है तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टैंजेंट का, इससे पास होने वाला अगर हम एक रेडियस बना दे तो ये रेडियस 90 डिग्री क्रिएट करेगा यहाँ, ठीक है? ध्यान से सोचो, लेट मी ड्रॉ द फिगर प्रॉपर्ली, ध्यान से सोचो। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये जस्ट
जस्ट यही पॉइंट है जो सर्कल को टच कर रहा है. ओके, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली, अदरवाइज वी विल एंड अप गेटिंग कंफ्यूज. या तो हमें हमें ओ से इस लाइन ए बी का डिस्टेंस पता करना है. ओ से इस लाइन ए बी का डिस्टेंस पता करना है. तो हम क्या ये कह पा रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस ओ एन होगा, ये तो रेडियस से बड़ा ही होगा, क्योंकि सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, उसे हमने ज्वाइन कर दिया, तो रेडियस से बड़ा होगा. आया ना? Yes, ma'am. अच्छा, कोई और पॉइंट ले लेते हैं, ओटी. अच्छा, ये ओटी भी तो रेडियस से बिगर होगा, राइट? क्योंकि हमें दिख रहा है कि एक पॉइंट टी है जो कि सर्कल के बाहर है, ऑफ कोर्स ये रेडियस से तो बड़ा ही होगा, राइट? Yes, ma'am. Similarly, Yes. similarly you will be taking any length and you will find that it is bigger than radius. तो क्या हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा OP है, यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? यस, ये जो OP है यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर होगा ही होगा. क्या हम ये कह पा रहे हैं यहाँ से? Yes, ma'am. तो इस थ्योरम का प्रूफ यही है कि सिंस ON is bigger than OP, since OT is bigger than OP, therefore OP must be the shortest distance, and hence it is perpendicular. Hence OP is perpendicular to the tangent AB. Is it clear to both of you? Yes. Yes, ma'am. इतना हमने कल के क्लास में कवर करा. Okay, and Okay. after this one